What was the last class topic? It's about Gauss theorem now. Students, respond to me now. Yes, very good. We're discussing about application of Gauss theorem. So first of all, we'll revise Gauss theorem once again because it took 2-3 days gap. So definitely we have to revise that concept again. So what is Gauss theorem? Can anyone define Gauss theorem? Tell me. Statement. Forgot? Students? Are you able to hear me? Nobody is responding. Hello, students. Am I audible? Vidya ma'am, am I audible? Hello? Hello? Students, am I audible? Hello? Not getting any response now. Hello? Hello? Hello, students? Hello? 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 I'm not getting audio from you. Hello? Yes, sir. Okay. Okay. So Gauss theorem statement कोई नहीं बोल रहा अभी याद नहीं आ रहा है total electric flux, okay, total electric flux over any closed surface is equal to the total number of charges enclosed in the Gaussian surface. That was I'll show you the slide once again to remember that theorem statement. You just see this, the surface integral of electric field intensity over any closed Gaussian surface, okay, any closed surface in free space is equal to 1 by epsilon 0 times the net charge enclosed in that surface. Okay, so that is the equation, mathematical form. Integral E dot ds is equal to 1 by epsilon 0 sigma q. That means number of charges enclosed in the Gaussian surface. Isn't it? अब याद आया? याद आया ना स्टेटमेंट? और उसके लास्ट एप्लीकेशन हम लोग ये वाला एप्लीकेशन डिस्कस कर रहा था लास्ट में. कौन सा था? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू a thin sheet. This was the last topic, isn't it? Electric field intensity due to infinitely long thin plane sheet of charge. Okay, here we consider a thin sheet, and due to thin sheet, what is the electric field intensity on both the side of this sheet? What will be the value of electric intensity? This was calculated by using a Gaussian surface of thin sheet. Okay, here we have to consider a thin sheet, and a Gaussian cylinder is considered here. On both the side of the Gaussian cylinder, you see the direction of electric field and ds area. So both are parallel here, and on this face also parallel, and for the curved surface both are making 90-degree angle. So the integral
will be divided into three parts. First part is for A surface, B surface and C surface. For A surface E dot ds plus B surface E dot ds, and B surface E dot ds and A surface E dot ds exist, and this will not be existing, isn't it? Hello, children, please respond to me. Huh? Yes, sir. So integral E dot ds value for A and B is ds only, eds, and for C it is 0. Therefore, total remaining is 2e into integral ds, isn't it? 2e into integral ds, मतलब ये पहला वाला दोनों का ऐड हो जाएगा, लास्ट वाला टर्म है ना उसका कैंसिल हो जाएगा, तो टोटल आएगा 2e into pi r square. Okay, pi r square is the area of the curved surface. एक कर्व्ड सरफेस का सरफेस एरिया, क्योंकि इंटीग्रल डीएस का मतलब होता है कर्व्ड सरफेस का टोटल सरफेस एरिया. ओके, so that's the condition. Now we'll move to the previous slide. Next slide. See here, now we'll make a small substitution. That is, here q by epsilon 0 you can write in terms of charge density. Okay, what is charge density? Sigma. Sigma is the symbol for charge density. What is that? Sigma is equal to what is the formula for sigma? Can anyone tell me? Sigma is equal to, students respond to me, sigma is equal to, are you there children? Yes, sir. And then tell me now, what is sigma? Sigma is surface charge density. Okay, what is the formula for surface charge density? Charge upon surface area. Charge upon surface area. Okay, so charge is q by a. Q by a. So q can be represented as, q you can replace as sigma into a. A means area of the surface. Okay, so sigma into pi r square. That is the value of q upon epsilon 0. So now that will be substituted for this formula. 2e into pi r square is equal to sigma pi r square upon epsilon 0. Okay, so now this cancels, pi r square cancel, and you get 2e is equal to sigma by 2 epsilon 0. This is the value of electric intensity on the surface of the cylinder. Okay, understood how we got this stuff? Students, you note down, take a screenshot and also note down. E is equal to sigma by 2 epsilon 0. Okay, इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखना है? वेक्टर फॉर्म के लिए देखो, इसको sigma by 2 epsilon 0 into I cap, मतलब I is the direction of electric field, so that direction unit vector you can consider. ठीक है, this way you can express the value of electric intensity for a thin sheet. तो अभी हम लोग 3 applications देखा है. एक sphere के लिए, what is the electric intensity outside of a charged sphere, on the surface of a charged sphere and inside the charged sphere, isn't it? ऐसा 3 अलग अलग पोजिशन का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया है हम लोग फर्स्ट एप्लीकेशन में. तो उसका फॉर्मूला क्या था? E इज इक्वल टू, उधर उधर सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 आया था. फाइनल ऑन द सरफेस इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 and inside it is 0. And now here, sorry, after that we consider a cylinder. For cylinder, what is the value of electric intensity? That also you calculated. Okay, for cylinder, 1 by 2 pi epsilon 0 lambda by r. That is the formula for electric intensity due to a cylindrical sheet. And then now this is for thin sheet. Thin sheet, what is the formula for electric intensity? E is equal to sigma by 2 epsilon 0. Okay, E is equal to sigma by 2 epsilon 0. Next, we'll move to the next slide. This slide, I think you have taken screenshot or you may be noted also. Are you writing, children? डेरिवेशन से ये सब आपको लिख के रखना है नोटबुक में. ठीक है, ये लेसन Yes, वाइज. sir. हाँ, ये स्लाइड्स में अभी क्या Yes, sir. आपको टाइम मिल रहा है तो देखने का, स्क्रीन स्क्रीन देख के लिखो, अच्छा सा लिख के रखो, स्क्रीनशॉट
लेके बाद में लिखेगा तो भी चलेगा, बट आपको नोटबुक में लिख के रखना है, ऐसा ये इम्पोर्टेंट है, नहीं तो बाद में क्या है, पढ़ाई करने के लिए बहुत तकलीफ हो जाएगा। तो राइटिंग प्रैक्टिस भी इम्पोर्टेंट है, तो अभी आपको लिखना भी है और स्क्रीनशॉट भी लेना है। नाउ सी सम ऑफ द कंक्लूजन फ्रॉम दैट पार्ट। The direction of electric field intensity is normal to the plane. Okay, plane sheet रहेगा तो उसका electric field का direction कैसे रहेगा? Normal to the plane of the surface and away from the positive charge distribution. अभी वो प्लेन शीट के ऊपर हम लोग पॉजिटिव चार्ज दिया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रहेगा? अवे मीन्स गोइंग अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। वो तो हम लोग लाइन्स ऑफ फोर्स में डायरेक्शन सीखा है, तो वो उसके हिसाब से रहेगा। मतलब पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो अवे फ्रॉम द surface, negative charge रहेगा तो towards the surface, so towards the plane surface. Okay, so that's the direction of electric field for positive plate as well as negative plate. Now electric field intensity is independent of the size of the Gaussian surface constructed. Means what type of cylinder you are considering, that is not a factor for the value of electric intensity. उसका लेंथ इंपॉर्टेंट है, वो किधर से कितना डिस्टेंस में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने वाला है, वो डिस्टेंस इंपॉर्टेंट है। और उसका साइज, सिलिंड्रिकल शेप का गोशियन सिलेंडर का साइज इज नॉट इम्पॉर्टेंट देयर। You can imagine a very small cylinder or a very large cylinder, there will not be any change in the final answer. Okay, it is neither depend on the distance of the point of consideration or the radius of the cylindrical surface. Okay, so radius of the cylindrical surface is not depends, and also the distance of point of consideration. इसमें ये फॉर्मूला देखो, इसमें डिस्टेंस किधर है, ये फॉर्मूला में सिग्मा बाय एप्सिलॉन जीरो है। सो इसमें डिस्टेंस भी नहीं आया है और रेडियस भी नहीं आया है, तो ये है थिन शीट का स्पेशलिटी। तो उसमें जस्ट आउटसाइड ऑफ द थिन शीट यू विल गेट सिग्मा बाय एप्सिलॉन जीरो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। ओके, the plane sheet is thick. If it is a thick sheet, then the charge distribution will be available on both the sides. So the charge enclosed within the Gaussian surface will be twice as before. Therefore electric field will be twice. मतलब मैंने अभी पहले तीन शीट का लिया था, तो तीन शीट का हम लोग को क्या फॉर्मूला मिला है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन जीरो, प्रीवियस स्टेप। ओके, प्रीवियस स्लाइड में मैंने क्या बोला था, हमको तीन शीट दिया हुआ है, तीन शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन जीरो ऑन वन साइड। बट अभी थिन शीट रहेगा, अभी थिन शीट है, मतलब एक बड़ा कंक्रीट सॉरी बड़ा मेटल शीट है, उसको थिकनेस भी है, बहुत ज्यादा थिकनेस है। समझ में आ रहा है क्या? रेस्पॉन्ड टू मी इन बिटवीन। Yes, sir. हाँ, थिन शीट रहेगा तो हाफ हो जाता है, थिक रहेगा, थिक शीट है मतलब उसको विड्थ थिकनेस है। इफ थिकनेस रहेगा तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन जीरो आएगा फॉर्मूला। ओके, तो ये डिफरेंस आपको समझनी है, इधर थिन शीट है और थिक शीट है। थिन शीट रहेगा तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन जीरो लेना है। इफ इट इज थिन मतलब उसको थिकनेस है, थिकनेस रहेगा तो क्या होगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन जीरो आएगा उसका। ओके, इट्स क्लियर? तो गॉस थ्योरम का Yes, sir. इतना कंसेप्ट है टेक्स्ट बुक में, आपको उसके डेफिनेशन, उसका प्रूफ और उसका एप्लीकेशंस, इतना एप्लीकेशंस है, तीन एप्लीकेशंस है इधर, ये सब आपको अच्छा सब सीखना है, प्रिपेयर करना है। ठीक है, नाउ विल डिस्कस सम ऑफ द न्यूमेरिकल्स फ्रॉम दिस पार्ट गॉस थ्योरम। ओके, so all of you open your notebook and write the question which I am showing here. Before that, we will discuss the formulas also. What is the first formula here? Gauss theorem formula, that is phi is equal to q by epsilon zero. Okay, phi is equal to q by epsilon zero. That's the formula. Second is E is equal to sigma r square by epsilon zero r square. This is for a sphere having capital R radius and the point is outside the sphere. So then it is sigma r square upon epsilon zero r square. And this is for cylinder. For cylinder, what is the formula? E is equal to lambda upon 2 pi epsilon zero r. Okay, E is equal to lambda upon
2 pi epsilon 0 r. This is the formula for electric intensity outside of a charged cylinder. Are you getting it? Okay. Then for thin sheet, what is the formula for thin sheet? Sigma by 2 epsilon. Okay. Let us take the first. You can just have the screenshot or you note down the formulas. We are going to discuss these formulas in the numericals. Okay. Now come to the first question. Note down the question, all of you. A uniformly charged conducting sphere of diameter 2.4 meter. Okay, diameter of the sphere is 2.4 meter. Has a surface charge density of. Surface charge density मतलब कौन सा symbol है? What is the symbol for surface charge density? Tell me. Sigma. Sigma, very good. Sigma is equal to 80.0 माइक्रो सिंबल क्या है माइक्रो ये सबको अभी समझना पड़ेगा सिंबल्स ओके माइक्रो कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर माइक्रो मतलब क्या है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ माइक्रो 10 कूलम raised to minus 6. वेरी गुड 10 raised to -6 coulomb per meter square okay now what you have to find the charge on the sphere. First question is to find the charge on the sphere. Okay. And second is what is the total electric flux leaving the surface of the sphere? What is the electric field outside the surface of the sphere? Okay, now it's time for you. Just try to solve. Uniformly charged conducting sphere of diameter. Diameter ये हमारा फॉर्मूला में रेडियस रहेगा तो पहले गिवन वैल्यूज लिखो गिवन वैल्यूज में डायमीटर 2.4 मीटर रेडियस इज कितना रेडियस हो गया 1. ओके 1.2 मीटर रेडियस ओके एंड देन सिग्मा इज 80 तो सिग्मा मिला है डायमीटर मिला है तो चार्ज फाइंड करना है तो सिग्मा का फॉर्मूला लिखो सिग्मा इज इक्वल टू charge upon surface area. Q by A. Very good. Q by A. Okay. A means here sphere का surface area होना चाहिए. What is the formula for the surface area of a sphere? Yes sir. ये सब आपको आना चाहिए. 4 pi r square. हाँ 4 pi किसको याद नहीं आ रहा है तो वो लिख के रखो. पढ़ाई करने का तरीका वो रहता है आपको नहीं पता है तो लिख के रखो. ओके सरफेस एरिया ऑफ द स्पीयर चाहिए हमको सरफेस एरिया सिलेंडर चाहिए और भी अलग अलग शेप्स है उसका मैथ्स में ऑलरेडी डिस्कस किया होगा वो फॉर्मूलास याद रखना ही पड़ता है उसके बिना हम लोग आगे आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा मतलब ये एक स्टार्टिंग है इसके आगे भी बहुत कुछ ऐसा फॉर्मूलास का यूसेज आएगा Sir, answer is 1.6 raised to 10 raised to 8 coulomb meter. Let us wait let all try to do this you go for the second part also find the electric flux outside the sphere. I'll show this first part. Yeah, in this case first you have to write the diameter given value सबको लिखना है क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको गिवन वैल्यूज लिखना जरूरी है कि उसमें से आपको समझ में आएगा कि क्या दिया है और उसका कन्वर्शन क्या है ये पहले से लिख के रखने का नहीं तो बाद में सब्स्टिट्यूशन के टाइम पे कंफ्यूजन आ सकता है आप मिस्टेक बाय मिस्टेक आप रेडियस के जगह पे डायमीटर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया तो पूरा मार्क्स जाएगा तो पहले लिख के रखने का क्या दिया है ठीक है और सिग्मा भी दिया है उसमें तो सिग्मा का वैल्यू लिखा फिर देखो फॉर्मूला लिखना है Q इज इक्वल टू एरिया ऑफ द स्फीयर इज 4 pi r square into sigma sigma is equal to Q by A सब लोग लिखो फॉर्मूला sigma is equal to Q by A तो Q is equal to sigma into area is 4 pi r square for the sphere therefore formula for this charge on the sphere is 4 pi r square into sigma okay then substitute the value by putting this pi value all of you know that 3.14 और 22/7 आपको क्या लगता है अच्छा वो लेने का मतलब वैल्यू तो सेम है
आपको 3.14 ले सकता है, नहीं तो 22/7 ले सकता है। दैट डिपेंड्स ऑन योर मल्टीप्लीकेशन स्किल। तो आपको कौन से वैल्यू से जल्दी हो सकता है वो डालना है। तो इसके साथ ये मल्टीप्लायर भी आएगा माइक्रो कूलम, क्योंकि मैंने पहले माइक्रो कन्वर्ट नहीं किया, सीधा लिख दिया इधर। इसको इधर हम लोग माइक्रो एक्चुअली कन्वर्ट कर रहा है, तो इधर इंटू 10⁻⁻6 लिख सकता है, बट वो आंसर मैं माइक्रो कूलम में ही आंसर ले लिया, इसलिए उसका प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये आंसर माइक्रो कूलम में आ गया। समझ में आ रहा होगा कि हम लोग चार्ज ही फाइंड कर रहे हैं, चार्ज का वैल्यू कूलम में ही है, तो उधर बाकी सब वैल्यू मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर माइक्रो कूलम में लिख दिया तो प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं तो क्या होगा, आपको माइक्रो कूलम की जगह पे इंटू 10⁻⁻6 लिख के सॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो आंसर ये आ जाएगा। अभी कोई तो बोल रहा था आंसर आपको सेम आंसर मिला है कि नहीं? somebody सर मैं सेकंड वाले का बोल रहा हूँ। ओके ओके, ये फर्स्ट पार्ट के लिए ये आंसर आएगा 1.45 इंटू 10⁻³ कूलम। ठीक है, सबको मिल रहा है कि चेक करके देखना है, ऐसा नहीं कि क्या कभी कभी सर फॉर्मूला में सब सब्स्टिट्यूशन बराबर हो जाएगा, बाद में मल्टीप्लाई करके आंसर नहीं मिलता है तो भी आपको मार्क्स नहीं मिलने वाला है। तो एक ये प्रैक्टिस ज़रूरी है, आपको मल्टीप्लिकेशन भी कैसे स्पीड फास्ट कर सकता है उसके लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है, तो प्रैक्टिस करने का। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। फिर हमको फ्लक्स फाइंड करने हैं। फ्लक्स करने के लिए फॉर्मूला क्या है, Q/ε0। so Q/ε0, Q is already calculated and ε0 value is it's a constant, so everyone know that what is the value of ε0? देखो 8.85 into 10⁻⁻12। 8 yes 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 Now substitute the value with the charge and this value, you get the answer. So this is the answer. It is 0.1637 into 10⁻⁹ okay, तो यूनिट आएगा इंटू 10⁸ के हिसाब से लिखा तो 1.637 इंटू 10⁸ तो फ्लक्स का यूनिट लिख सकता है। फ्लक्स का यूनिट है इधर, फ्लक्स का यूनिट है, नहीं तो ये फॉर्मूला के हिसाब से you can write the unit based on this formula also. Okay, Newton meter square per coulomb is the unit of flux here. Okay, is that correct answer you got? Yes, sir. What about others? I am getting response from only one boy. All of you are with me or not? Doing something else by keeping this on? Yes. No sir. Everyone do this. It's simple calculation, simple multiplication and simple concept. बट अभी स्टार्टिंग में हम लोग सिंपल ही करेंगे, बाद में उसका डिफिकल्टी लेवल बढ़ते जाएगा। तो आपको कितने डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है वो आपको चेक करना है। ठीक है, just move to the next question now. Okay, the question is on your screen. Now you can read and write the given value and what to calculate, then start doing it. First, I am giving time for you to do it. After that, I will explain and show the answer. The metal sphere of radius 1 centimeter is charged with 3.14 microcoulomb. Okay, 3.14 microcoulomb. Find the electric intensity at a distance 1 meter from the center of the metal surface. फाइंड द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, मतलब आपको कैपिटल ई इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करनी है। डिस्टेंस 1 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मेटल स्फीयर, मेटल सरफेस, सॉरी मेटल सरफेस, हाँ स्फीयर ही है। मेटल स्फीयर का रेडियस भी दिया है फर्स्ट 1 सेंटीमीटर, तो कैपिटल आर इज 1 सेंटीमीटर। चार्ज विथ मतलब चार्ज दिया है कितना है 3.14 माइक्रोकूलम, charge is 3.14 microcoulomb. Find the electric intensity at a distance 1 meter from the center, मतलब small r is 1 meter. तो given value हो गया, फर्स्ट रेडियस को सेंटीमीटर में दिया है, वो मीटर में कन्वर्ट करो। r is equal to 1 into 10⁻⁻² मीटर। ओके, सेंटीमीटर में सब्स्टिट्यूट करने के बाद रॉन्ग हो जाएगा, मतलब बाकी सब ऐसे यूनिट में है, ये मीटर में है और ये वैल्यू
और हमको कांस्टेंट का वैल्यू भी मीटर में ही पता है, मतलब सॉरी ऐसे यूनिट में ही पता है, तो मिस्टेक हो सकता है। इसलिए पहले सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो और चार्ज को कूलॉम में कन्वर्ट करो, सब ऐसे यूनिट में लिखना है। ओके, क्यू दिया है, रेडियस दिया है, तो अभी क्या चाहिए, फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला? E इज इक्वल टू Q by epsilon naught. क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। नो, इसको in terms of the sphere, here there is a charged sphere having radius 1 centimeter. Okay, उसके ऊपर चार्ज। फाइंड द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट a distance 1 मीटर। 1 मीटर में क्या है वो फाइंड करना है, तो आर भी आएगा ना फॉर्मूला में। तो चार्ज स्फीयर का फॉर्मूला मैंने दिया था पहले। चार्ज स्फीयर देखो, दिस फॉर्म, okay, 1 by 4 pi epsilon 0 q upon r square. This is the formula for electric intensity outside of a charged sphere. Then substitute the value. Q is given 3.14 into 10 raised to minus 6 and 4 pi epsilon 0 का value 8.85 into 10 raised to minus 12, then 1 square, 1 square. Okay, then what is the answer? Just see this. Solve and write 0.2825 into 10 raised to 5 न्यूटन पर कूलॉम आनी चाहिए। ठीक है, ये सॉल्व करके देखो, इसमें 3.14 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर और नीचे है, और ये 10 रेज टू माइनस 6 है, 10 रेज टू माइनस 12 है, तो उसमें एक नीचे 10 रेज टू माइनस 6 रहेगा। ठीक है, फिर उसको ऊपर लेके जाओ, फिर क्या आएगा, 10 रेज टू 6 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 8.85। उसको सॉल्व करने के बाद तो आंसर आ जाएगा 0.2825 इंटू 10 रेज टू 5 न्यूटन पर कूलम। ओके, सॉल्व किया? Yes, sir. Those who want note down this. Now I'll move to the next question, question number 3. Okay, an infinitely long infinite line charge produces a field of 9 into 10 raised to 4 Newton per coulomb at a distance of 2 centimeter. Okay, 2 centimeter distance में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, 9 into 10 raised to 4 Newton per coulomb. Calculate the linear charge density. So lambda linear charge density वो फाइंड करनी। गिवन वैल्यूज लिखो पहले। line charges, it's a wire, so for wire linear charge density lambda you can take. Okay, so formula is E is equal to 1 by 2 pi epsilon 0 lambda upon r. ये सिलेंडर का केस है ना, सिलेंडर का फॉर्मूला यूज करना है, तो दैट इज 1 by 2 pi epsilon 0 lambda by r. Then lambda is the linear charge density, r is the distance of point electric field is produced. Okay, now using that formula you can write lambda is equal to 2 pi epsilon 0 r into E. Okay, getting? रीअरेंज करो फॉर्मूला को, ये फॉर्मूला आ जाएगा। अभी उसमें सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करो, ये फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करो सब वैल्यूज। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, रेडियस दिया है, पाई का वैल्यू और एप्सिलॉन का वैल्यू आपको पता है, सब्स्टिट्यूट करो। रेडियस इज 2 सेंटीमीटर, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करके लिखना है कि बाकी सब ऐसे सिस्टम में रहेगा। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा, हाँ ये आपको यूज करना है फॉर्मूला, लैम्डा इज इक्वल टू 1 बाई 9 इंटू 10 रेज़ टू 9। अभी 9 इंटू 10 रेज़ टू 9 क्या है पता है क्या आप सबको? 1 बाई 4 पाई, हाँ 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 का वैल्यू होता है 9 इंटू 10 रेज़ टू 9। तो वो सब्स्टिट्यूट करके जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, तो क्या है
आपको पाई और 8.85 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके थोड़ा सा लंबा जाता है मल्टीप्लीकेशन, इसलिए हम लोग क्या करते हैं 1/4πε0 को 1 बाय, 10 raised to minus 7. हाँ तो उसको 9 × 10⁻⁹ है। अभी इधर हम लोग उसका सब्स्टिट्यूशन के लिए वो रीअरेंज किया है, तो मैंने इधर रीअरेंज करके उसको सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ है, इसलिए 1/9 × 10⁻⁹ आ जाएगा। ये क्या है, इसका रेसिप्रोकल लिया है और 4 पाई चाहिए, इसलिए 2 से डिवाइड किया। ठीक है, वो आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो आप डायरेक्ट भी कर सकता है, डायरेक्ट इसमें सब्स्टिट्यूट करो और सॉल्व करो। ठीक है, इसको शॉर्टकट चाहिए वो सब ऐसा वैसा करेंगे। So shortcut that depends on your idea. How to solve that is purely your mathematical skill. इसलिए मैं बोल रहा था फिजिक्स का टूल रहता है मैथ्स, मैथ्स के बिना फिजिक्स कुछ ऑपरेट नहीं कर सकता। फिजिक्स का स्क्रू ड्राइवर है मैथ्स। ठीक है, फिजिक्स के लिए मैथ्स जरूरी होता है, तो वो स्क्रू ड्राइवर जैसा काम करते हैं। ये ऑपरेट करने के लिए वो चाहिए, फिजिक्स का ऑपरेशन के लिए मैथ्स जरूरी है। तो इसलिए मैथ्स का बेसिक, अभी हम लोग को हायर लेवल का मैथ्स नहीं चाहिए, बट सिंपल सिंपल मैथमेटिकल स्किल रहता है, वो 10th स्टैंडर्ड तक आपका ऑलरेडी हो गया है, वो मैथमेटिकल स्किल आपको बार बार यूज करना ही पड़ता है। ठीक है, दैट इज अबाउट द स्लाइड, दैट इज अबाउट द आंसर, दैट इज 10⁻⁻7 कूलॉम पर मीटर। ये आंसर मिल रहा है कि नहीं? Yes, sir. ओके, नाउ Yes, sir. so I have given here three different numericals which is to support all these applications. अभी ये टेक्स्ट बुक में आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मिल जाएगा। टुडे itself you have to do that homework. ओके, टेक्स्ट बुक में गॉस थ्योरम रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कितना है वो सब आपको सॉल्व करना है, दैट इज योर असाइनमेंट फॉर टुडेज टॉपिक। ओके, सो गॉस थ्योरम का टॉपिक इधर क्लियर हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो अभी आपको पूछ सकता है। सर प्रीवियस स्लाइड बताओ ना एक बार। ओके, क्वेश्चन ना, ये सेम क्वेश्चन के बारे में पूछ रही है। यस मैम। ओके, सो दिस इज फॉर इन्फिनाइट लाइन चार्ज, मतलब आपको वायर के ऊपर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। ओके, वायर इज हैविंग सम चार्जेस and that produce an electric field of 9 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। मतलब वो वायर के साइड में 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है, 9 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज डेंसिटी ऑन दैट वायर, मतलब वो वायर के चार्ज डेंसिटी क्या है, दैट इज लैम्डा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। E is equal to 1/2πε0 lambda upon r. This is the formula. Now this you can express in terms of 1/4πε0. तो मैंने इसके लिए मेरा पहला स्लाइड में मैंने फॉर्मूला रीअरेंज करके दिया था, मतलब आपको इधर 2 से मल्टीप्लाई करना है, तब ये क्या होगा 1/4πε0 आ जाएगा। तो इधर भी 2 आ जाएगा, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करने का, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करने का, तब क्या हो गया ये 1/4πε0 इंटू 2 लैम्डा बाय आर हो जाएगा। मतलब इसका वैल्यू अभी हमको डायरेक्ट 9 × 10⁻⁹ लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁹। ओके, दिस वैल्यू इज 9 × 10⁻⁹। ये सबको आता होगा, मतलब लास्ट ईयर भी समझाया था कि ये 1/4πε0 का वैल्यू, ओके, that is equal to 9 × 10⁻⁹ into 2 lambda by r। ये ऐसा मॉडिफाई कर सकता है फॉर्मूला। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए इजी हो जाएगा कि आपको ε0 का वैल्यू सब डाल के मल्टीप्लाई करना, मतलब वो लंबा प्रोसेस हो जाता है। फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करने के आपको शॉर्टकट यूज करना है। सो क्या क्या शॉर्टकट्स है वो याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये सबको याद होगा ना, ये वैल्यू याद है ना 1/4πε0 यस सर। हाँ, तो यस। वो इसमें सब्स्टिट्यूट। अभी इसको रीअरेंज करके लैम्डा इज इक्वल टू लिखना है, तो आ जाएगा उसका वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू ER/2 इंटू
बाई 9 इंटू 10 वो मॉडिफाई किया मैंने नेक्स्ट स्लाइड देखा हो ना। देखो इधर मैंने उसको रीअरेंज करके ऐसा लिख दिया, फिर सब्स्टिट्यूशन भी कर दिया। तो इसमें सब्स्टिट्यूशन करने के बाद इस आ जाएगा 1 बाई 9 इंटू 10⁻⁹ 0.02 दैट इज आर इंटू 9 इंटू 10⁴ दैट इज ई वैल्यू अपॉन 2। ये 2 कन्वर्शन की वजह से आएगा, ठीक है। अभी इसको सॉल्व करने के बाद आंसर हो जाता है 10⁻⁻7 कूलम पर मीटर। क्लियर है ना, कंसेप्ट क्लियर हो गया? Yes, sir. ओके, हाँ सर। so today itself all of you do the homework. okay, टेक्स्ट बुक में गॉस थ्योरम रिलेटेड न्यूमेरिकल्स रहेगा और उसमें सॉल्व भी है अनसॉल्व भी है, दोनों करना है। टेक्स्ट बुक में सॉल्व भी दिया है अनसॉल्व भी है, दोनों टाइप का क्वेश्चंस आज प्रैक्टिस करने हैं। टुडे आई थिंक दिस इज द लास्ट स्लाइड फॉर यू टुडे, टाइम इज ऑलमोस्ट ओवर।